Good morning. Good morning, ma. Hi, good morning. Good Hi, morning. very happy good morning. Very, very good morning. Very good morning to everyone. Very good morning, ma'am. Weekend morning. Weekend Good morning. morning. Weekend morning, right? Very good morning. Good So morning. our today's chapter is on magic dust, everyone. Chapter number 10. And this is about giving blessings. Giving blessings to everyone who work for us, everyone who makes our life easier, everyone who just hands over, delivers things to our doorstep. Could be जो जितने भी ये डिलीवरी पीपल ब्लिंकिट वाले होते हैं या बिग बास्केट वाले होते हैं जो घर पे सामान पहुंचा के जोमेटो स्विगी people जो stores में होते हैं who are helping us, like locate things, find things, putting things in our basket, grocery people, जो हमको सामान देते हैं, people who are domestic helpers in our house, people who come to pick up the garbage, trash collectors जो होते हैं. So this today's chapter is for them. For all those people, we have to dig and think about who all are responsible for making our life easier and so selflessly and every day. Every day consistently कुछ करना. हम तो अपनी blessings भी शायद नहीं लिख पाते हैं मतलब उस नंबर पे जो हमने सोचा था कि we are going to write so many of them every day, है ना. अपने लिए भी नहीं कर पाते हैं. These people are doing so selflessly for others. And imagine how our life would be like had they not been there in our life. Isn't it? मतलब अगर कोई trash, garbage हमारे dustbins overflow कर रहे होते, अगर ये नहीं आते या हमको कितना walk करके public dustbins के पास जाना पड़ता अपना trash फेंकने के लिए. Imagine people जो newspapers सुबह देते हैं. मतलब they don't have a choice that even if they're not well, they can't take a rest. Because इनके nodal points में इनको रात को 3:30 पे पहुंचना होता है. People who deliver the newspapers, है ना. So आज का जो हमारा पूरा chapter है, it is for those people who make our life so much easier and to bless them. Blessing एक बहुत बड़ी power होती है जो सिर्फ human beings के पास है in the, like in all living species. So we have the power to radiate our thoughts to the other person. Okay, so that is what we'll be using today because it's all about that energy going from our life. And इसमें कभी कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए. So yeah, this is in this book, it is called Magic Dust because इसमें सब magic होता है. So magic dust, everyone. और इसकी जो image है, that will speak a lot about this chapter. Because इसमें हम देखेंगे it's like a metro station. People are going. They are all going for work because कुछ ना कुछ काम करने जा रहे हैं. Because आप देखो कोई भी ऐसा person नहीं है जिसके पास bag नहीं है या सामान नहीं है. Everybody has got something in hand. इसका मतलब है वो काम करने के लिए जा रहे हैं. और हर कदम के पास बहुत सारा magic dust. If you see कि सबके जहाँ पे पैर हैं उस जगह पे there is gratitude. That means उस काम के लिए जो भी काम ये लोग करते हैं उसके लिए हमको thank you बोलना है इन लोगों को. And see there's so much of glitter all around. And these are not the people we know. इसीलिए इनका पीठ हमारी तरफ है. Their back is facing us because we don't know who they are. They might have just come to deliver a Swiggy order to our house. Just that. We have never seen them before. लेकिन हम उनको बहुत सारा ब्लेसिंग आज देंगे. थैंक यू का ब्लेसिंग और भी हम ऐड कर सकते हैं जो हम चैप्टर के बाद आपको बताएंगे. So yeah, so Dishant, you're reading today? Yes, ma'am. We can. Please start. Day 10, Magic Dust, everyone. Good morning. I quote, "No duty is more urgent than that of returning thanks." I unquote. Saint Ambrose, theologian and Catholic bishop. Ancient spiritual teachings say that we give to another person with a full heart returns to us 100-fold. So being grateful and saying thank you to another person for anything you receive from them is not only urgent, it's vital
to improving your own life. Gratitude is a powerful energy. And so, whomever you direct gratitude's energy towards, that's where it goes. If you think of gratitude's energy looking like sparkling magic dust, then when you express gratitude to another person in return for something you have received from them, you are literally sprinkling them with the magic dust. The powerful positive energy in the magic dust reaches and affects whomever you sprinkle it on. Most of us make contact with many people every day, whether on phone, through email, or face to face at work, in stores, restaurants, elevators, buses, or trains. And in many cases, the people we make contact with deserve our gratitude because we are receiving something from them. Now, think about the people you encounter on a typical day who provide you with some kind of service, like those working on stores or restaurants, bus or cab drivers, customer service providers, cleaners, or the staff at your work. The people who work in service are giving themselves to serve you, and you are receiving their service. If you don't say thank you in return for their service, then you're not being grateful and you're stopping the good from coming into your life. Think about the maintenance workers who keep our transport systems working safely and those who maintain the service of utilities such as electricity, gas, water, and our roads. Think about the cleaners of the world who clean our streets, public bathrooms, trains, buses, airplanes, hospitals, restaurants, supermarkets, and office buildings. Now you can't personally say thank you to all of them, but you can sprinkle them with magic dust by saying thank you next time you pass one of them. And you can be grateful next time sit at your clean desk or walk on a clean sidewalk or across a polished floor. So when you are at a cafe or a restaurant, sprinkle magic dust by saying thank you to each person as they serve you, whether cleaning the table, giving you the menu, receiving your order, filling your gas with water, serving the meal you ordered, clearing the table, giving you the bill, or giving your change. Remember to say thank you every single time. If you are in a store or a supermarket checkout, sprinkle magic dust and say thank you to the person who serves you or packs your groceries. If you are traveling by plane, sprinkle magic dust by saying thank you to check in people, the people in security, the people who checks your ticket as you board, and the cabin crew who greets you as you enter the plane. During the flight, say thank you to the cabin crew every time they perform a service for you. Serving drinks and food, or even removing your plate or trash is a service. The airline thanks you for flying with them. The captain thanks you, and the crew thank you. So do the same and thank them as you leave the plane. And every time you take off and land at your destination, say thank you, because the fact that you can fly is an absolute miracle. Be grateful to those people who assist you in your work,
whether they are clerical staff, receptionists, canteen staff, cleaners, customer service people, or any of your work colleagues. Magic does them all with thank you. All of them are doing you a service and they deserve your continued gratitude in return. Store assistants, waiters, and waitresses work very hard to serve you people. They have chosen a job to serve other people, and serving the people means encountering all kinds of people in varying moods, including those who are very ungrateful. Next time you are being served by another person, remember that the person who is serving you is a precious daughter or son to parents, an irreplaceable brother or sister to siblings, a mother or father to a family and children, and a loved and adorable partner or friend. And they deserve your kindness and patience. At times, you may encounter a person in service who behaves rudely towards you or doesn't give you attention you think you deserve. It may be more challenging to be grateful in those times, but your gratitude cannot be dependent on another person's behavior. Choose to be grateful no matter what. Choose magic in your life no matter what. It might help you to remember that you don't know what difficulty someone might be going through at the time you connect with him or her. They may be feeling unwell. They may have just lost a loved one. Their marriage might have just ended. Or they may be in desperation and at a tipping point in their life. Your gratitude and kindness might be the most magical thing that happens to them that day. I quote, "Be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle." I unquote. Philo of Alexandria, philosopher. If you thank someone on the phone for his or her help, don't throw away your thank you. Instead, give the reason why you are grateful. For example, thank you for your help. Thank you for giving out of your way for me. Thank you for giving me so much of your time. Thank you for resolving the situation for me. I'm very grateful to you. You will be amazed at the response from the other person when you do this one simple thing, because they will feel your sincerity. So when you say thank you to someone in person, look at his or her face. They will not feel your gratitude or receive your magic dust unless you look directly at them. You have wasted an opportunity to help that person and to change your own life if you say thank you to the air, or say thank you as you're looking down, or thank you while you are looking on your cell phone, because you're not really sincere when you do that. A couple of years ago, I was in a store buying a gift for my sister. The store assistant who served me listened to what I was looking for and then went on a search for the perfect gift as though it was for her sister. As the store assistant handed me the bag containing the perfect, beautifully wrapped gift, I received a call on my cell phone. I was finishing the call when I reached the front entrance of the store. And suddenly, an unsettled feeling swept over me.
I immediately returned to the store assistant who had helped me. And I not only thanked her, but I told her the reason why I was grateful to her and how much I appreciated everything she did for me. I showered her with the gratitude's magic dust. Her eyes filled with tears, and the biggest smile you have ever seen swept across her face. Every action always has an equal reaction. If you really mean it when you say thank you, the other person will feel it. And you will not only have made another person feel really good, but your gratitude will fill you with an indescribable happiness. That day, I walked out of the store indescribably happy. I don't use magic dust only for the people who serve. I use gratitude's magic dust in all kinds of situations. When I say goodbye to my daughter before she drives to her home, I feel gratitude for her having arrived home safely. And I wave my fingers in the air and imagine sprinkling magic dust over her and her car. Sometimes I sprinkle magic dust on my computer before I begin a new project, or sprinkle magic dust ahead of me before I walk into a store to look for something in particular that I need. My daughter uses magic dust when she's driving. And if she sees another driver who seems to be stressed and is speeding, she sprinkles magic dust over them to help make them feel better and keep them safe. Today, take gratitude's magic dust with you for the people who work in service and look for every opportunity you can to sprinkle magic dust on everyone by saying thank you. Thank at least 10 people who perform different services that you benefit from today. It doesn't matter if you don't get the opportunity to do it in person, you can mentally acknowledge the people whose service you benefit from. The magic dust will still reach them. As an example, mentally say to yourself, I'm really grateful to the cleaners who work through the early hours of the morning, making sure that the streets are cleaned of trash every day. I've never really thought about how grateful I am for that service, which is done like clockwork every day. Thank you. Make sure you keep count of the people in service you are grateful for so that you know when you have thanked 10 different people for their services and sprinkled magic dust on them all. If you imagine the sparkling magic dust falling over people when you thank them, you have a picture of what really happens in the invisible with the power of gratitude. With this picture in your mind, it will help you to believe and know that the magic dust of gratitude really does reach people and that it will be available to help them to improve their lives. And every time you sprinkle the magic dust over another person, it also returns to you in your own life. If you're at home today, then sit down with a pen and journal or on your computer and go back in your mind, recalling the instances where people in service went out of their way for you. It may have been someone on the phone, or
have been a tradesperson who was determined to resolve a problem for you. Maybe you have received great service from your mail person, the trash collectors, or recycling companies, or even local store assistants. Make a written list of 10 instances where people in service helped you and send the magic dust by saying thank you to every one of them. Magic reminder, read through tomorrow's practice today because the practice for day 11 begins when you first wake up. So now the magic practice number 10, magic dust everyone. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Today, sprinkle magic dust on 10 people who perform services you benefit from by thanking them directly or otherwise by mentally acknowledging and thanking them. Feel grateful to them for the service they perform. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Read through tomorrow's practice today because the practice for day 11 begins when you first wake up. Yeah, thank you Thank so much, Dishant. This is the longest chapter of this book. Really long. It is double the size because there's so much to be explained. I think Rhonda Byrne को हमको convince करना पड़ रहा है that, like spend a lot of time instead of complaining and bemoaning your life, give a lot of blessings to someone else. In fact, हम जब end वाला जो part है, जब सारे 28 chapters पूरे हो जाते हैं, तो एंड वाले पार्ट में अलग अलग लिखा हुआ है कि अगर आपको रिलेशनशिप्स में चेंज करना है, डू दीज असाइनमेंट्स फ्रॉम द बुक, लाइक चैप्टर नंबर दिस, चैप्टर नंबर अलग अलग नाम लेके. मनी में करना है तो ये चैप्टर्स करो, करियर में करना है तो ये चैप्टर्स करो, है ना. सो हेल्थ में करना है तो ये करो, और उन सब में एक कॉमन फैक्टर है, रादर दो. वन इज दिस मैजिक डस्ट एवरीवन. मतलब आपको कोई भी चीज अगर अपनी लाइफ में चाहिए वापस, तो आपको वो ब्लेसिंग किसी और के लिए देनी पड़ेगी. जैसे अगर आपको अपना मनी, अपनी इनकम बढ़ानी है, देन यू हैव टू प्रे फॉर ऑल द अदर्स एंड ब्लेस देम विद प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस. सो जैसे ही आप वो करोगे, वो साइकिल घूमना शुरू हो जाएगा और वो एनर्जी आपके पास वापस आएगी. अगर आपको हेल्थ बहुत अच्छी चाहिए, तो कोई जो हेल्थ से सफर कर रहा है, उनको खूब सारी ब्लेसिंग्स, उनको मैजिक डस्ट दो. मैजिक डस्ट इज जादुई धूल, जैसे इमेजिनरी वो होती है, दैट उनके ऊपर आप ब्लेसिंग्स डाल रहे हो कि उनकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाए, और उनका लिवर या जो भी जहां पे भी उनको प्रॉब्लम है, वो इट बिकम्स वेरी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. Agar somebody has a problem in the heart, then bless them that they develop a very strong and a healthy heart and they enjoy their life and their health. So इस तरह जब इस एनर्जी के साथ हम ब्लेसिंग देंगे, तो अपने आप हमारी जिंदगी में डिफरेंस आने लग जाएगा. ठीक है. सो इसलिए बहुत जरूरी होता है दैट वट एवर इट इज, एंड ये एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं करना चाहिए कि मैं उसको इसलिए ब्लेस कर रही हूँ ताकि मेरी भी जिंदगी अच्छी हो जाए. It should come selflessly. Energy is, we are answerable only to ourselves. मतलब we are not answerable to anyone else for the blessings जो हम किसी को देते हैं. तो बहुत ज्यादा हम लोग कंज्यूम्ड रहते हैं अपने आप से, अपनी प्रॉब्लम्स के साथ में. सो इंस्टेड ऑफ दैट हमें अपना माइंडसेट, अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास ऑप्शन नहीं है. और आप जो भी जहां पर भी हो, जगह पे हो, देखो एक होती है टेलीपैथी, है ना, एक होती है टेलीकिनेसिस. टेलीपैथी ये होती है कि आपने, जैसे अगर मैं दिशांत ने अभी बात की और मैं इनसे इन पर्सन मिली नहीं हूँ, और ये कहीं और रहते हैं, मैं कहीं और रहते, हम दिल्ली एनसीआर में ही हैं, लेकिन
नहीं ऐसे मिले ना, वो अपने घर में, मैं अपने घर में हूँ, लेकिन अगर मैं दिल से इनको अभी दुआएं बोलूंगी कि दिशान का आज का दिन बहुत अच्छा रहे, वो खूब हंसे, खूब फन एंड लाफ्टर हो उसकी जिंदगी में, उसको अनएक्सपेक्टेड पैसे कहीं से आ जाए एंड ही विल बी लाइक वाओ, ठीक है, सो आई एम सेंडिंग दैट ब्लेसिंग टू हिम, वो उसकी जिंदगी में पूरी होंगी, ठीक है। जब इस तरह से, इसको बोलते हैं टेलीपैथी, जब आप ह्यूमन बीइंग्स को करते हो ये, और टेलीपैथी सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स का ट्रेट होता है, आई मीन नो वन एल्स कैन डू टेलीपैथी, ठीक है। सो ये जो मेरे ब्लेसिंग्स हैं ये उन तक पहुंच जाएंगे। दूसरा होता है टेलीकाइनेसिस, जिसमें आप चीजों को भी अफेक्ट करते हो, जैसे द मोमेंट यू से थैंक यू टू माई ब्यूटिफुल कार दैट मेक्स ट्रांसपोर्टेशन सो इजी, thank you to my chair and table, thank you to my geyser, thank you to my microwave, thank you to my gas pipeline, thank you to this electricity. They are not human beings, right? But you can alter their energy also by blessing them. जैसे हम thank you बोलते हैं ना उनके लिए, तो अब आप देखो कि वो उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, जबकि वो ह्यूमन बींग्स नहीं है, ठीक है, लेकिन वो एनर्जी फिर भी हमारे पास आएगी। तो इसीलिए फर्स्ट वाला जो कोट था उसमें यही लिखा हुआ था, नो ड्यूटी इज मोर अर्जेंट देन गिविंग थैंक्स, रिटर्निंग थैंक्स। तो ये रिटर्निंग है, लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं, लोग हमारे लिए इजी कर रहे हैं, द ट्रैफिक पुलिस, द कॉप्स ऑन द रोड, पीपल हु आर the way they manage things, people who are in the hotel industry, people who are जो restaurants में करते हैं, जाते ही सबसे पहले पानी आ जाता है, उसके बाद वो आपका ऑर्डर लेने आते हैं, फिर आप ऑर्डर को कस्टमाइज भी कराते हो कई बारी, उसके बाद वो टेबल क्लियर करते हैं, फिर वो बिल लेके आते हैं, फिर आप उनको पैसे देते हो, फिर वो चेंज लेके आते हैं, फिर एक बिल डेस्क पे एक दूसरा पर्सन बैठा होता है, वो वहां बिलिंग कर रहा होता है, ठीक है। सो एवरीथिंग इज सो वेल ऑर्केस्ट्रेटेड, इजंट इट, सो ऑर्गेनाइज्ड। जब आप जाते हो तो ऐसे थोड़े हमको सोचना चाहिए कि ये तो इनकी ड्यूटी है, इनको सैलरी मिल रही है इस बात की, दे बेटर डू इट, ठीक है। दैट इज अ वेरी रूड वे ऑफ एक्चुअली ट्रीटिंग पीपल। सो सेइंग थैंक यू इज द मोस्ट अर्जेंट ड्यूटी ऑफ आवर्स फॉर everyone and everything, irrespective of what their behavior is towards you. इसमें लिखा हुआ है ना रोंडा बर्न ने कि उनका बिहेवियर कैसा है, इससे आपको नहीं फर्क पड़ना चाहिए, ठीक है। आपको फिर भी उनको उसी इंटेंसिटी के साथ ग्रैटिट्यूड देना पड़ेगा, थैंक यू करना पड़ेगा, ब्लेस करना पड़ेगा, बिकॉज यू डोंट नो दैट, हो सकता है कि आपका जो थैंक यू है वो दिन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग हो, ठीक है। So it just could be. I was just talking to someone day before yesterday, and that person said that I do so much for my house, so much for my parents, but my parents not once have said thank you to me. So it's not that, तो मुझे बहुत हिट की थी उस वक्त, वो बहुत ही पासिंग स्टेटमेंट था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम लोगों को फॉर ग्रांटेड ना लें, क्योंकि हम अपने बच्चों को शायद फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ठीक है बच्चे हैं, इनका तो फर्ज है, करेंगे ये, इनका तो like it's their duty as as children that they're doing this for the parents. So no, I mean ना तो किसी की उनकी ड्यूटी है ना पेरेंट्स की ड्यूटी है, दोनों को एक दूसरे को थैंक यू बोलना पड़ेगा for the smallest of the thing that anyone's done, right? So ये बहुत जरूरी चीजें होती है, because everything starts from home. जब घर आपका पीसफुल होता है ना, तभी आप वर्ल्ड में भी पीस कर सकते हो. So as they say, charity begins from home. So for all the parents and for all the children and anybody who's there in a house who are doing things constantly, it is to be, we have to be very, very thankful to them in person. And now फिर उसमें है कि अगर कोई आपसे रूडली बिहेव करता है, सपोज यू गो टू अ बैंक, ओके, कोई नेशनलाइज बैंक में आप गए और वहां पे कोई बहुत रूडली आपसे बात करता है या आपको बैठा के रखता है, आप बोल रहे हो बार बार मुझे जाना है, कितना टाइम और लगेगा मैम, कितना टाइम और लगेगा मैम, कितना टाइम और लगेगा, ठीक है। सो और वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कह रहे हैं, थोड़ा और देर बैठो, थोड़ा और देर बैठो। सो जब आप उनसे डील करोगे तो आपको गुस्सा आ जाएगा, यू विल बी एंग्री एट देम ऑब्वियसली, बिकॉज यू वेटेड फॉर 45 मिनट्स, एंड दैट पर्सन यू सॉ वाज सिटिंग आइडल। सो आपको गुस्सा तो आएगा ही ना, लेकिन रौनबा ने सिखाया है उसके बावजूद अपनी फ्रीक्वेंसी कम नहीं करनी है और थैंक यू बोलना पड़ेगा उनको, हमको,
बिकॉज यू डोंट नो कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, यू डोंट नो दैट वो फोन पे थी तो वो क्या फोन पे बात कर रही थी, इट जस्ट कुड बी दैट उसके बच्चे बीमार हैं, इट जस्ट कुड बी दैट उसकी फैमिली में कोई हॉस्पिटलाइज हो रहा है और उसको पूरा कोऑर्डिनेट करना था, हमें नहीं पता होता। तो इसीलिए इसमें लिखा हुआ है दैट that everybody in this world is fighting a hard battle, right? So everybody, there's no person, अगर हम बोलें कि आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है, तो it is not, everybody is in making, everybody is struggling, they have their own set of struggle। हाँ, अब हमको लगता नहीं है कि वो struggle है, like if you ask me what is the problem in your life, I would not say, but for someone to spend a kind of a day जिस तरह मैं बिताती हूँ would be very very difficult। मेरा वो way of life हो गया है, मुझे पता है that I have to give 200% to my work, I have to do very very creative things when I'm at work in the morning every day, no matter how tired I am, sleepy I am, maybe slept at 4 o'clock in the morning, but I'm up by, I do complete all my blessings before 6 o'clock, and then I'm logged in here, and then I go for my workout, which is, like that's my non-negotiable area. So I ensure that I'm not eating ulta pulta khana. I ensure that मैं बहुत sugar नहीं लूं, मैं ensure करती हूँ कि मैं ऑफिस में चाहे कितना भी challenges हो, अपने आप को above the line रखना। तो लोगों को ये तो बहुत आसान लगता है, वाह इसकी लाइफ बहुत अच्छी, उनको क्या पता कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ अपने आप पे, है ना? किसी को वो दिखता नहीं है। ऊपर से 50 मैसेजेस और आ जाते हैं प्रॉब्लम्स के, इतना टाइम देने के बाद भी, ठीक है? इतना सुबह उठ के, ये मेरा प्रोफेशन थोड़ी है, ये तो मैं वैसे ही करती हूँ बिकॉज आई लव, I can't see people suffering, because जबकि ये पता लग गया है life is so easy and so effortless, but people are still struggling and crawling, right? So I just do it as my contribution to make this world a better place to live. I am a life coach professional. I've done my courses, but this is not my profession. So constantly giving me messages, उसको ये हो रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पति से बनती नहीं है, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हो यार? इतने सारी चीजें मैं आपको बताती रहती हूँ, इतने चैप्टर्स हैं, लास्ट के चैप्टर में तो लिखा हुआ है आपको रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, आप ये 5 चीजें करो, आपको हेल्थ की प्रॉब्लम है या आप 6 चीजें करो। मैं आपको कैसे बता सकती हूँ? मैं अपना बता सकती हूँ, मुझे क्या पता आपकी फीलिंग फ्रीक्वेंसी कहाँ रहती है। हो सकता है आप वो 50 एफर्मेशन लिख लो 51 टाइम्स और 108 टाइम्स, बट पीछे से लोगों को बुरा बुरा बोलते हो, फ्रीक्वेंसी बार बार नीचे जाती है, वो नहीं पता ना। सो इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, इट इज नॉट अबाउट एफर्मेशन। एफर्मेशंस आर नॉट गोइंग टू चेंज योर लाइफ लाइक दैट। अपने आप को पूरे दिन अबव द लाइन ग्रैटिट्यूड और लव में रखना, वो एक मसल बिल्डिंग एक्टिविटी होती है। तो मैं आपको क्या ही बता दूंगी, मुझे क्या पता आपकी लाइफ के बारे में, ठीक है? नहीं पता होता ना, तो वो हमको अपने ऊपर वर्क करना पड़ता है। और फिर मुझे गिल्टी भी लगता है कि 50 मैसेजेस आई एम नॉट एबल टू आंसर, आई डोंट आंसर वन, आई कैन नॉट। एंड पीपल जो प्रोफेशनली लाइक ये कि मुझे वहां से इंटर्नशिप करनी है, आप बता सकते हो, कैन यू बीट दैट? आई मीन आई एम नॉट अप्रोचेबल डायरेक्टली। अगर ऑफिस का काम है तो आपको अपनी फैकल्टी से बात करनी पड़ेगी, फिर अपनी हेड से बात करनी पड़ेगी, वो हेड आरएम से बात करेंगी, फिर मुझ तक बात आती है ना। तो ऐसे थोड़ी है कि जस्ट बिकॉज यू आर देयर इन द ग्रुप, यार मतलब प्लीज थोड़ा कंपैशनेट हो जाओ, बहुत जरूरी है। मैं इस 1 घंटा 15 मिनट के अलावा आपको टाइम नहीं दे सकती, बिकॉज आई डोंट लाइक टू क्लटर द लाइफ, एंड आई जस्ट वांट टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी एंड टेल दैट यू इन मिडल ऑफ द चैप्टर, ठीक है? मेरे पास बैंडविड्थ नहीं है उस टाइम उस तरह की। आई गेट अ हेफ्टी सैलरी फॉर अ लॉट ऑफ वर्क, एंड यू नो दैट आई हैड इंडियाज लार्जेस्ट एजुकेशन। So कोई स्कोप नहीं होता, 105 ऑफिसेस वी हैव, एंड एक एक में कुछ टेक्निकल ग्लिच होता है, वो उसको कभी रिजॉल्व करना होता है, कभी हेल्प करनी होती है। नॉन स्टॉप मैं और मेरी टीम ट्रेनिंग्स कर रहे होते हैं, ठीक है? आई एम राइटिंग बुक्स, कोर्स की किताबें लिखनी है जो मैं नहीं लिख पाती हूँ, नॉन स्टॉप मेरे पास मैसेजेस आते रहते हैं। प्लीज इस ग्रुप की आप एडवांटेज मत उठाओ दैट यू हैव माय नंबर, अदरवाइज आई हैव टू रिमूव माई सेल्फ फ्रॉम द ग्रुप, दैट्स वेरी वेरी क्लियर, ठीक है? मुझसे नहीं ये सब। आप ये देखो दैट विद ऑल ऑफ यू इट इज दैट whenever you all have needed, or whenever we have even a party or a nice lunch or a dinner, I have never said that I'm not available.
I mean, ask Ina, Meena, who are there here, or Poonam, or Anju. I pretty much hang out with them quite often, you know, at least once in a month. मैंने आज तक ये बोला है मेरे पास टाइम नहीं है, या मुझे वहां जाना है, मुझे ये करना है, मेरा ये है, मेरा वो है, मैं बिजी हूँ, मेरे पास आपके लिए. I never, I just say that उस दिन I'm coming back, उस दिन मेरी फ्लाइट है तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं नेक्स्ट डे I can be available, but instead of dinner can we make lunch? That way. ये थोड़ा रीअरेंजमेंट होता है, बट मैं नो कभी नहीं बोलती, बिकॉज आई डोंट लाइक टू कीप माई लाइफ क्लटर्ड. बट पिछले एक हफ्ते से यू विल नॉट बिलीव, और इतना रोना धोना, मतलब ये मेरी फ्रीक्वेंसी भी अफेक्ट होती है उसकी वजह से. आई एम अ ह्यूमन एट द एंड ऑफ द डे ना. तो इसीलिए मैं बिल्कुल अच्छे से समझी हूँ कि अगर कोई आपसे नहीं ठीक से बात कर रहा है किसी भी सिचुएशन से, मैं फिर भी बहुत प्यार से उनको बोलती हूँ, ठीक है. इवन देन आई डोंट लोअर माय फ्रीक्वेंसी, सो फिर भी मैं बहुत प्यार से आंसर करती हूँ. एंड इमेजिन किसी और के लिए, वो पर्सन है भी नहीं, मतलब वो सेशन भी नहीं सुनता है, उसकी जिंदगी में बदल सकती हूँ कभी? आप बताओ, बदल सकते हो? मतलब ये लेवल ऑफ टेकिंग समवन फॉर ग्रांटेड है, तो इस इंसान की जिंदगी कैसे बदलेगी? यू कैन नॉट टेक मी फॉर ग्रांटेड लाइक दैट टू दिस एक्सटेंट दैट मैं कहाँ से इंटर्नशिप करूं, मेरी उसकी 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 बेटी को ये प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, मेरा इनका ये हो रहा है, मेरे पति ने उस दिन मुझको ऐसे बोल दिया. एंड दीज आर सब बेसिक एग्जाम्पल्स. यू विल लाफ इफ आई टेल यू सम अदर थिंग्स. This is not the way of taking people for granted, you know, like just because this is not my profession. My profession is I'm a doctor in health and nutrition. ठीक है, और मुझे वो काम करना होता है जिसके लिए मुझे सैलरी मिलती है. मैं नहीं आप लोगों को एंटरटेन कर पाऊंगी अपने वर्किंग आवर्स में, जबकि जब मुझे टाइम मिलता है लंच ब्रेक पे या कुछ ऐसी चीज, या आई एम जस्ट टेकिंग अ ब्रीदर इन मिडल ऑफ राइटिंग अ बुक, सो आई डू आंसर, यू नो, रिलेटेड टू द ग्रुप. So it is very important that instead of saying thank you, आप लोगों पे गुस्सा करो, है ना. इंस्टेड ऑफ सेइंग थैंक यू टू पीपल कि ठीक है उस पर्सन ने आपके लिए इतना किया, तो इसमें लिखा हुआ है ये वाली लाइन. सो थोड़ा सा वी कैन बी अ लिटिल मोर सिंसियर एंड अ लिटिल, आई डोंट थिंक दैट जितना मैं बताती हूँ इससे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है. आपको एफर्मेशंस चाहिए, मेहनत करो. मुझे किसने बताया था? हमारी मेंटर से हम पूछ सकते थे. इतनी झाड़ पड़ती थी, मतलब पहले बात तो हिम्मत ही नहीं होती थी कि हाय भी बोलो उनको, ठीक है. सो अपने आप ही लुढ़कते फुड़कते सीखा है ना. दैट्स हाउ वी हैव टू ग्रूम आवरसेल्व्स, इजंट इट? सो आई आल्सो हैव ओपन्ड द बुक. आई टोल्ड यू व्हेन माय फ्रेंड्स डैड हैड अ सर्जरी, मैंने फटाफट वो पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड खोली. इसका मतलब है मैंने अपने लिए एक फोल्डर बनाया हुआ है. आपने बनाया? नहीं बनाया तो आज ही बनाओ, ठीक है. फोल्डर खोला, हेल्थ चैप्टर पे गई, उसमें से वो जो एफर्मेशन थी जिसमें बेटी ने अपनी माँ के लिए ब्लेसिंग्स भेजी थी क्योंकि मम्मा का सर्जरी था, फिर मैंने उसको टाइप किया, ठीक है. एंड आई डिड नॉट गो फॉर अ वॉक दैट डे, आई डिडंट गो फॉर माय जिम, ठीक है, बिकॉज ये प्रायोरिटी था उस दिन. सो मैंने वो सारा लिखा, और इनके फादर का था, उसमें मदर का था, तो वो उसके हिसाब से चेंज किया. फिर मैंने उनको भेजा कि ये बार बार बोलो, पढ़ो, जितनी देर हॉस्पिटल में हो. मैंने तो नहीं पूछा किसी और से फोन करके मुझे वो एफर्मेशन बता दो. अरे शक्ति गवैन की किताब भरी पड़ी है एफर्मेशन से, है ना. मेहनत करो थोड़ी सी, ओपन दिस बुक, है ना. फालतू का इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से ऊपर से नीचे जाने से अच्छा है इन किताबों के चैप्टर पढ़ ले. हेल्थ का वो आ रहा है, फटाफट सारे हेल्थ चैप्टर्स जो हैं इसमें, जो मैजिक हेल्थ है, फिर अभी दोबारा से फिर आएगा. सो हेल्थ वाले चैप्टर्स पढ़ो, मैजिक डस्ट करो, मैजिक वॉन्ड करो, जादू की छड़ी जो होता है, मैजिक वॉन्ड जो आएगा चैप्टर नंबर 24, वो करो. गारंटी आई कैन गिव यू इन राइटिंग दैट आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, और हेल्थ मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है. हाँ, आपको विक्ट्री शेयर करनी है, आप वो मुझसे कर सकते हो, बट वो भी आई वुड टेल यू टू शेयर ऑन द ग्रुप, है ना. मुझसे शेयर करोगे तो मुझे तो पता ही है विक्ट्री होगी. जो सिंसियर है, यहाँ पे सारे दिग्गज लोग हैं, उनकी जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुंच रही है. आप देखते रहो, पीपल हु आर चेंजिंग. आई मेट दिशांत, लाइक मेरा बर्थडे था जिस दिन मेरी पहली बार बात हुई थी. उनकी आवाज में फर्क है, उनके एटीट्यूड में फर्क है, उनका माइंडसेट फर्क है, फाइटिंग स्पिरिट है. सो इतना चेंज आया है ना अभी. तो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनको समझ में आ रहा है, वो अभी मेरे शोल्डर्स पे आके रोने का कोई फायदा नहीं है ना. सो प्लीज वो अपने आप को हैंडल किया करो, अपनी सिचुएशन. किताबें पढ़ो,
knowledge is very important. And अगर आपको अपनी इनकम बढ़ानी है, learning is earning, learn it, do it yourself. You don't know मैं कितनी बार ये किताबें खोलती हूँ, अलग अलग बुक्स मुझे खोलनी पड़ती है रेफरेंस के लिए कई बार. And if you see my library here like this, it is there. So you can't say that, oh, ये 10 किताबें पढ़ती हैं एक महीने में तो हम इन्हीं से पूछ लेते हैं, हमको क्या करना. ठीक है, अगर वो वाली एनर्जी है ना तो हमारी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी. ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी. नहीं समझ आ रहा है, अफर्मेशन शक्ति गवैन ने हर चैप्टर में अफर्मेशंस हैं. पिछले आई थिंक 5-6 चैप्टर्स में नॉन स्टॉप अफर्मेशंस है. प्लीज गो देयर एंड रीड इट. Okay, please go there and read it. Okay, now coming back to magic dust. So magic dust, everyone, आज के assignment में इसमें ये है that ancient teachings में लिखा है that when we bless the other person, we will like वो energy 100-fold होके हमारे पास आती है. First paragraph में ये था ना that when you bless the other person, जब आप किसी को blessings भेजते हो किसी और की जिंदगी में दिल से, जब दुआ करते हो, हिंदी में दुआएं बोलते हैं, तो वो 100-fold 100 गुना मल्टीप्लाई होकर आपकी जिंदगी में वापस आती है. तो आपकी जिंदगी में कुछ भी गड़बड़ चल रहा है ना, उस एरिया में खूब सारा ब्लेस करो लोगों को. आप लिख के कर सकते हो. आज का असाइनमेंट तो मेंटली करना है, बट इसमें ये भी है दैट इफ यू हैव मोर टाइम टुडे और इफ यू आर एट होम टुडे, रॉन्डा बर्न ने लिखा है कि आप ऐसे भी लिख सकते हो पैराग्राफ के फॉर्म में, दैट थैंक यू टू ऑल द क्लीनर्स ऑन द रोड, जिनको हम जानते थोड़ी है, बट जब हम रोड पे जाते हैं तो सुबह सड़कें कितनी साफ होती हैं, है ना. So when you go on the road, so thank you to all the cleaners that you wake up so early in the morning, maybe 4 o'clock, 5 o'clock, and every day you clean the roads, pick up the trash and make it so hygienic for all of us. Thank you to all the cleaners, है ना. अब उन तक वो बात पहुंचेगी, इसको हम टेलीपैथी बोलते हैं. जिसको भी आपने ब्लेस किया, इवन इफ दे आर सिटिंग इन सम अदर, मे बी यूरोप में है अभी, लेकिन हमारी जो ब्लेसिंग्स है, बिकॉज एनर्जी टाइम नहीं लेती है ट्रैवल करने में और स्पेस नहीं लेती है. एथर के थ्रू, इट्स कॉल्ड एथरल एक्सपीरियंस. एथर इज द फिफ्थ एलिमेंट ऑफ स्पेस जो हम बोलते हैं, उसका दूसरा नाम एथर होता है. सो एलिमेंट ऑफ स्पेस में टाइम ट्रैवल रियलिटी नहीं होती है, वो इंस्टेंट जाती है. तो जैसे आपने किसी को ब्लेसिंग भेजी, through that ethereal pathways, it reaches the other person instantly, and you will see that person, and it's very penetrative. Okay, so it will penetrate that person's life instantly. So खूब अपने लाइफ को, अपनी जिंदगी को लोगों की ब्लेसिंग्स के लिए यूज करो. और जितना ज्यादा, जहां पे भी, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है कि जब आप फ्लाइट में जाते हो या आप ट्रेन में जा रहे हो, उस पूरी ट्रेन को ब्लेस करो. ऐसे सोचो कि वो गोल्डन डस्ट से भर गई है. ठीक है, उसमें एक एक पर्सन जो जा रहा है उसकी जिंदगी में खुशियां आ जाए, और वो जिस काम के लिए जा रहे हैं उनके काम पूरे हो जाए. अगर वो किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए जा रहे हैं तो उनका बहुत ये बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ हो. ठीक है, सेफ्टी के लिए आप ब्लेस करो फॉर द सेफ्टी ऑफ दिस ट्रेन, एंड ब्लेस द इलेक्ट्रिसिटी जिसकी वजह से वो ट्रेन चल रही है. ठीक है, तो इस तरह से हमको ब्लेसिंग करनी पड़ती है. तो इट इज नॉट जस्ट ऑलवेज टू पीपल, ऑल्दो असाइनमेंट में 10 लोगों को हमको आज चूज करना है जिनको हमको ब्लेस करना है. ठीक है, तो वो 10 लोग जो आपके लिए काम करते हैं, जस्ट दे मेक देयर लाइफ, योर लाइफ इजियर. सो दे कुड बी द रोड क्लीनर्स जो आपके अपार्टमेंट्स में, कॉन्डो में काम करते हैं. They could be your electrician, your plumber, your grocery person who always packs your groceries, your domestic helpers, the garbage pickers, the newspaper delivery person. Again, I said the Swiggy, Zomato people जो आपके online shopping को deliver करते हैं, people from Ajio Lux, or anyone for that matter, जहां से भी आप अपना सामान मंगवाते हो. तो इन सब लोगों के लिए हमको 10 आज चूज करना है. रॉन्डा बर्न ने लिखा है कि कीप अ काउंट ऑफ 10. ओके, सो कीप अ काउंट ऑफ 10 बोला है तो कुछ रीजन होगा. सो विल कीप अ काउंट ऑफ 10 और हम उनको बहुत ब्लेस करेंगे रीजन बता के. ठीक है, मन में, मेंटली. हम सामने से तो नहीं बोल पाएंगे क्योंकि हमको पता नहीं है. हमारे इलेक्ट्रिशियन में भी डे बिफोर यस्टरडे आया था और वो हमारा रेफ्रिजरेटर फिक्स करके गया था. हो सकता है एसी रिपेयर पर्सन आए, उन्होंने आपका एसी फिक्स किया. हो सकता है फैन फिट करने के लिए आए. कुड बी एनीबॉडी फॉर दैट मैटर, you know, the painters, if you got something painted in your house or whosoever.
सो ये सर्विस इंडस्ट्री के लोग हैं, या फिर आप कहीं गए और वहां पे कोई वेटर या वेट्रेस थी जिन्होंने आपके बहुत अच्छे सर्विस की, वाज वेरी पोलाइट टू यू एंड यू नो काइंड ऑफ सर्व योर टेबल, तो उनका आप सोच के कर सकते हो मेंटली. 10 people, mentally acknowledge them and bless them. Magic dust डालनी है of saying thank you to them and with the reason in your mind that what have they done. ओके और ये प्रैक्टिस सुबह नहीं है जरूरी करनी, आप दिन में किसी भी टाइम कर सकते हो. एंड दैट्स हाउ वी हैव टू. एंड इसमें ये लिखा हुआ है रोंडा बर्न ने कि मैं ये प्रैक्टिस बहुत जगह अप्लाई करती हूँ. जब मैं अपना लैपटॉप खोलती हूँ और जब अपना काम करना शुरू करती हूँ तो लैपटॉप पे बहुत सारी मैजिक डस्ट थैंक यू की डालती हूँ. मैजिक डस्ट मतलब थैंक यू, ब्लेस करना, थैंक यू फॉर डूइंग दिस फॉर अस, थैंक यू कंप्यूटर फॉर मेकिंग माई लाइफ सो इजी, दैट वे. ठीक है. फिर वो कहती है मेरी बेटी, जब उनकी बेटी की शादी हो चुकी है, वो दूसरे घर में रहती है अपने हस्बैंड के साथ, तो वो कह रही है कि जब मेरी बेटी वापस अपने घर जाती है तो मैं खूब सारी उसकी कार के ऊपर और उसके ऊपर मैजिक डस्ट करती हूँ फॉर हर सेफ रिटर्न बैक, है ना. और ये वाली प्रैक्टिस ओके ना, जिन जिन जगहों पे आपको इरिटेशन होती है, जैसे आप ट्रैफिक में गए, आपको जल्दी हो रही है तो आप बहुत हाइपर हो या एंग्शियस होते जा रहे हो, है ना, तो उस वक्त ट्रैफिक पे मैजिक डस्ट करना, सारी कार्स पे मैजिक डस्ट करना, बिकॉज फ्रीक्वेंसी आपकी इंस्टेंटली उससे चेंज हो जाएगी. इंस्टेंट, बिकॉज जो चीजें इरिटेट करती है उन सब पे आप मैजिक डस्ट. अगर आपको अपनी डोमेस्टिक हेल्पर से प्रॉब्लम है, मे बी शी इज नॉट वर्किंग वेल और जो भी है, लेट आती है, खूब सारी मैजिक डस्ट करो थैंक यू, आप देखना उसका एटीट्यूड और बिहेवियर चेंज हो जाएगा. ठीक है. सो दैट्स हाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड यूज दिस मैजिक डस्ट more and more. Blessings, I mean, like sometimes for me, how I practice this is that sometimes I put magic dust, but क्योंकि अभी कुछ टाइम हो गया है, सालों हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए ये ग्रैटिट्यूड की, तो अब एग्जैक्टली वो गोल्डन डस्ट आई डोंट इमेजिन, बट आई ऑलवेज से यू नो दैट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट हियर एंड नाउ I bless, pray, and glorify that this person receives the best of health, you know, that way. Or you can listen to the YouTube video again if you want that. And this is how you can bless. Sometimes you can, you know, whichever way, जैसे किसी को business में prosperity चाहिए, business बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, then you can bless that I really from the bottom of my heart bless so and so person that his business keeps escalating and he enjoys the prosperity with the best of mind. Okay, that's also important कि दिमाग ठीक रहे जब बहुत ज्यादा पैसा आ जाए तो. So that way, so whichever way you want to bless, you can put imaginary magic dust. ये NLP techniques होती हैं कि आप गोल्डन डस्ट किसी के ऊपर डाल रहे हो थैंक यू की, और उसमें से थैंक यू के स्पार्कल्स निकल रहे हैं. ठीक है. ये NLP टेक्निक्स होती हैं. तो मैजिक डस्ट करके भी आप कर सकते हो. यू कैन स्प्रिंकल बाय फ्लटरिंग योर आईज, बाय इमेजिनिंग व्हाटएवर इट इज. सो दैट्स द प्रैक्टिस फॉर टुडे. सो 10 people you need to choose. उन पे रीजन के साथ मेंटली मैजिक डस्ट करनी है हमको थैंक यू की. ठीक है. और इसमें एक एग्जाम्पल रोंडा बर्न ने बताया है जो हमने सुन ही लिया है, सो आई एम नॉट रिपीटिंग दैट अगेन, कि वो स्टोर में गई और फिर उनका फोन आ गया, फिर उनको वो स्टोर वाली जो सेल्स पर्सन थी उनको खूब सारी चीजें दिखा रही थी कि आप अपनी सिस्टर के लिए ये गिफ्ट ले सकते हो, ये ले सकते हो. तो उनको बड़ा अच्छा लग रहा था कि मतलब इतनी मेहनत से वो दिखाती जा रही है एज इफ उसकी खुद की बहन का बर्थडे, और जबकि ये अपनी सिस्टर के लिए ले रही थी. तो उसके बाद उनका फोन आ गया, वो स्टोर से बाहर चली गई, फिर उनको लगा कि नहीं नहीं मुझे जाके थैंक यू करना चाहिए, ये मेरा फर्ज है. और फिर वो वापस स्टोर में गई और उन्होंने उस लड़की को थैंक यू बोला और उसके टीयर्स ऑफ जॉय थे दैट वे. और दूसरी चीज याद रखना दैट योर थैंक यू शुड नॉट डिपेंड अपॉन द बिहेवियर ऑफ अदर्स, है ना. यू स्टिल हैव टू ब्लेस देम, नो मैटर वो लोग आपको कितना परेशान करते हैं, आपको उनको ब्लेस करना पड़ेगा. दैट इज व्हाट. So first, count my blessings subah, which is write your 10 blessings of what you have in your life currently, और उसको रीड करके 3 बार थैंक यू बोलना है. फिर 10 लोगों को चूज करना है, मैजिक डस्ट उन पे डालना है, दिल से थैंक यू रीजन बता के, और ये सुबह की प्रैक्टिस नहीं है. और नेक्स्ट ऑफ कोर्स इज द मैजिक रॉक, जो अच्छे से करना होता है, ये नहीं कि निपटाने के लिए. अच्छे से मुट्ठी में आप मैजिक रॉक पकड़ो और यू नो लाइक थिंक थ्रू सुबह से लेके रात तक,
और उसके बाद you will see that happening. So yesterday there is a practice on day number 14, just to share a little experience with all of you. It was just, I sometimes play with the universe, you know, I give it a task. So I thought yesterday, you know, जब मैं Have a Magical Day chapter का नाम है, वो मैं रोज करती हूँ, कभी कभी बोल के करती हूँ, कभी शावर में करती हूँ, या फिर कभी कभी लिख के करती हूँ. तो कल मैंने लिख के किया था. हैव अ मैजिकल डे में, मतलब हम पूरा दिन पहले से ही डिजाइन कर लेते हैं सुबह. जैसे आज मुझे पता है कि अभी ये करना है, अभी वर्कआउट करना है, वर्कआउट के बाद मुझे तैयार होना है, आई हैव टू गेट ड्रेस्ड, आई हैव टू शावर, फिर उसके बाद मुझे ऑफिस जाना है, ऑफिस में मुझे पता है आज क्या क्या काम है, उसके बाद शाम को मुझे कहीं और जाना है, फिर इवनिंग कैसे स्पेंड करनी है. तो मैं सुबह से ही लिख लूंगी ना, जो वही हैव अ मैजिकल डे हम सब कर ही चुके हैं, वो वाला चैप्टर बहुत बार. तो उसमें कल मैं ऐसे टास्क दिया यूनिवर्स को. मैंने कहा कि सी दिस इज हाउ मच आई हैव इन माय बैंक राइट नाउ, which was a lot, like a very high figure. And I wrote that I don't know, today I need to have, you know, like I want an unexpected money. And तो वो राउंड फिगर में नहीं था वो पैसा ना. ऑब्वियसली इफ इट इज लाइक से 12 lakhs 300 and something ऐसे है ना, तो अब 12 lakhs 300 and something है, तो फिर मैंने यूनिवर्स को डायरेक्शन दिया कि 13 लाख का फिगर आज टच हो जाना चाहिए, देखो कैसे करना है आपको, हाउ में तो मुझे जाना नहीं है. तो ऐसे करके लिख दिया. And you will not believe that I think when did I get that notification? Around 6:30, 6:45, that some money got credited, and actually it became a round figure. Can you believe it? Like, this is how universe does things for us, provided हम अच्छी frequency में बोले. And it was just a game. It was not that I, you know, like needed money or something. ठीक है, सो इट वॉज जस्ट अ गेम. सो दीज आर मेनी लिटिल गेम्स. कभी कभी मैं संडे को कहती हूँ कि देखो आज मैं नेटफ्लिक्स पे जरूर पिक्चर देखने वाली हूँ, मुझे आई नीड दैट काइंड ऑफ एन ईज विथ माई ग्लास ऑफ वाइन. ऑफ कोर्स आई लव टू हैव माई ग्लास ऑफ वाइन एंड वॉच सम नाइस मूवी ऑन द नेटफ्लिक्स. सो आई वाज लाइक, आई सेड दैट देखो जो मूवी है ना, मुझे स्ट्रगल नहीं करना है बिल्कुल भी, जो मुझे देखनी चाहिए वो चुपचाप मेरे सामने फ्लैश कर देना, बिकॉज आई डोंट वांट टू स्ट्रगल. सो दीज आर द काइंड ऑफ गेम्स, यू नो, समटाइम्स इन हैव अ मैजिकल डे I keep doing. So you all can also do that. It's fun actually, absolutely. और अब कल की प्रैक्टिस, तो इसमें ये है that कल की प्रैक्टिस को हम आज ही पढ़ें, क्योंकि कल है मैजिक मॉर्निंग. मैजिक मॉर्निंग मतलब सुबह आंख खुले बेड पे ही हैं, बेड पे लेटे लेटे, thank you that I have life, thank you for the air that I'm breathing, thank you that I have this home, thank you for my bedroom, thank you for my bed, thank you for my pillow, thank you for the sheet, thank you for electricity, thank you that I have a beautiful body, thank you for the fan, thank you for the AC, thank you for the doors and windows. And as you get up, put your foot on the floor. Thank you that I can stand, and thank you for my energy. Thank you for my shoes or chappal, whatever you're wearing in the house. Then thank you for the rug that you have on the floor. Then you go to the bathroom. Bathroom की एक एक चीज के लिए thank you. तो कल मैजिक मॉर्निंग है, तो सुबह 10-11 बजे तक ये चलेगी. तो तब तक आप जो यूज कर रहे हो, anything that you touch, anything that you see, okay, anything that you use, you have to say thank you for that. So tomorrow, इसीलिए लिखा हुआ है कि आज की प्रैक्टिस, बिकॉज हम तो 6 बजे लॉग इन करेंगे. हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 6 बजे तक बहुत सारी चीजें कर चुके होते हैं, है ना. तो उन सब के लिए, सो इसलिए हम मॉर्निंग वेस्ट नहीं करेंगे, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है वो मैं आपको कल ही बताऊंगी. सो यस, वी गो टू द अदर बुक. Yeah. So this is Creative Visualization by Shakti Gawain, a very beautiful lady, very nicely. She would always be dressed in pearls and a picture perfect, beautiful lady. Okay, died at the age of 70 years, but did a lot, you know, American citizen थी. तो उन्होंने ये बुक हमको लेगेसी में छोड़ के गई हैं, तो हम उसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनके जो बहुत सारे इतने ब्यूटीफुल एफर्ट्स जो उन्होंने किए किताब लिखने में, खुद को एजुकेट करने में. जब भी कोई किताब लिखता है ना, उसके पीछे बहुत लोगों का काम होता है, मतलब इतने लोगों का बुक्स पढ़ना पड़ता है, इतनी रिसर्चेस पढ़ी, बिकॉज आई एम अ राइटर ऑफ वन, आई नो कितनी मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है, आप सोच भी नहीं सकते. मतलब नॉट ये वाली पढ़ाई, ये तो मैं बहुत करती हूँ, बट मेरी प्रोफेशनली जो है
बहुत पढ़ना पड़ता है, लेटेस्ट रिसर्च, लाइक क्लिनिकल न्यूट्रिशन में जा जाके कि क्या लेटेस्ट रिसर्च है. So, if we really want to thank Shakti Gawain, we have to follow her practices very diligently and apply them in our lives. And the moment हम experience करेंगे अपना victory, we will obviously say thank you to her. I think that would be her, like a credit to her legacy that she's leaving behind for us through these books. So yes, we can start reading from point number 3. कल हमने गोल सेटिंग के बारे में पढ़ा था ना, कि पहले एनुअल 5 ईयर के गोल्स हो, उसमें सोचो को 1 साल के कौन से गोल्स हैं, फिर उसके बाद सोचो कि अच्छा 1 साल के हो गए, अब मेरे लाइक इस साल के, जैसे हाउ आई हैड टोल्ड सुनीता द अदर डे दैट किस तरह से वो करना है. तो उनके गोल्स को मैंने बताया था दिसंबर 31 तक के अभी गोल्स लिखो, अभी बहुत ज्यादा आगे मत सोचो. तो वो हम भी कर सकते हैं, है ना. दिसंबर 31 तक हमको क्या क्या अचीव करना है, हम अभी वो गोल्स पे फोकस कर सकते हैं जैसे इन्होंने बोला है. और फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 3. या मीतू, यू रीडिंग? Yeah. Point number 3. When you find that you have accomplished a goal, even a small one, be sure to acknowledge yourself for that. Give yourself a pat on the back and enjoy at least a moment of satisfaction about it. All too often, we accomplish our goals and forget to even notice or enjoy the fact that we have done so. Point number 4. Don't take on too much at once. Set goals that feel good to you. If you feel overwhelmed, confused, or discouraged, simplify. You may want to work on goals in one area of your life only, such as your job or your relationship. This process is ultimately to help you enjoy your life more. If you set a lot of goals that you don't accomplish, you are probably either setting them unrealistically high or setting goals that you don't truly desire and therefore have no real inner intention of pursuing. Choose goals that you genuinely like and want and are realistic for you. Your goals should make you feel good, uplifted, expanded, full of pleasure, challenged. If not, find ones that do. सो अगर आपके जो भी गोल अकम्प्लिश होते हैं तो पैट योर बैक, अपने आप को शाबाशी दो, बोलो थैंक यू. ठीक है, तो अपने आप को अप्रिशिएट करो दैट यू कुड एक्चुअली डू दैट, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. गोल अचीव हो जाता है, जैसे मैंने आपको जो बताया था कि मैंने जो कल का ही गोल सेटिंग तो हैव अ मैजिकल डे करते हैं, तो अगर वो किया था दैट यूनिवर्स कैन यू जस्ट मेक इट अ राउंड फिगर, एंड दिस वाज एंड इट हैपेंड. सो आई एक्चुअली थैंक्ड एंड गिव अ पैट ऑन माय बैक कि लाइक इतनी अच्छी फ्रीक्वेंसी थी कि इतना आराम से वो अचीव हो गया इस तरह से. So that's what it is. And of course, अगर आपको गोल बहुत डिफिकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो उस गोल को अभी मत करो, बिकॉज उसको देख देख के बार बार स्ट्रेस आएगा, और स्ट्रेस आएगा इसका मतलब आप बिलो द लाइन जा रहे हो, क्योंकि उसमें वरी, फियर, ये सब चीजें आ जाएंगी. ऑल दैट शुड नॉट हैपन. ठीक है, अपने आप को अबव द लाइन रखो, हैप्पीनेस में रखो. इसीलिए अगर कोई बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग मतलब आपको लग रहा है कि अरे ये तो बाबा बहुत हैवी है, डोंट डू दैट. ठीक है, हेल्थ को लेके कुछ ऐसा है आपको कि मेरे बाल बहुत लंबे हो जाएं, सपोज आपका गोल है कि मेरे बाल हिप लेंथ तक हो जाएं और अभी में भी शोल्डर लेंथ है, तो बहुत हैवी लगेगा और फिर बहुत टाइम टेकिंग भी तो है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगेगा ना हिप लेंथ होने में, तो वो बार बार आपको स्ट्रगल आएगा. अगर आप कर सकते हो एंड्योर तो ऑफ कोर्स वेल एंड गुड, देयर आर सो मेनी पीपल विद अ लॉट ऑफ टॉलरेंस एंड पेशेंस एंड ऑल ऑफ दैट. सो अगर वो कर सकते हो, नथिंग लाइक इट. लेकिन अगर आपको बहुत रेजिस्टिंग थॉट्स आ रहे हैं कि अब ये और कटवाना पड़ेगा, नीचे स्प्लिट एंड्स हो गए, अब फिर ट्रिमिंग इतनी मुश्किल से तो 2 इंच बढ़ाए थे, अगर वैसी वाली दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके. सो जो फिगर्स भी मैं कोट करती हूँ वो सब एग्जाम्पल के तौर पे होते हैं. सो अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर आप उस गोल को चेंज कर दो. ठीक है, अभी आप शोल्डर लेंथ के नीचे आप में भी कुछ और कर लो, दैट आपके वेस्ट लेंथ तक हो जाए. So that is how you have to. So it should be fun. It should be challenging. It should not be impossibly appearing to you. Although nothing is impossible, but it should not look impossible right now.
जैसे अगर आपकी अभी 4 लोगों की कंपनी है जिसमें 4 लोग काम करते हैं, आपको उसके 10 ब्रांचेस और खोलने हैं, लेकिन अभी 10 ब्रांचेस में आपको रेजिस्टेंस आ रहा है कि पता नहीं कब तक होंगे, बहुत टाइम है, पता नहीं इतने साल बाद देखा किसने। नो, इमिडिएटली चेंज इट, गो टू ओपनिंग 2 मोर सेंटर्स अभी। तो टोटल आपके अभी 3 हो जाएंगे, एक करंट वाला है और 2 और हो जाएंगे आपके, तो टोटल अभी 3 सेंटर्स का। जैसे आप 3 अचीव करोगे वैसे आप 10 का फिर कर सकते हो। So that is how we have to move forward. Can we please mute ourselves, guys? So we'll just go to, I think it should be a new chapter. Ideal scene. Neetu? Yeah, ideal scene. Creative visualization can take the form of mental imagery of spoken or written words or of a physical image or picture. See the next section on treasure maps. Anything that helps you to create a clear blueprint to put out in the universe is an aid in creative visualization. This exercise helps you to create a clear picture through written words. The process of doing it helps you get clearer about what you really want, and it helps you to manifest it. I use it for all my important goals. Think of a goal that is important to you. It can be a long range or short range one. Write down the goal as clearly as possible in one sentence. Underneath that, write ideal scene and proceed to describe the situation exactly as you would like it to be when your goal is fully realized. Describe it in the present tense as it already exists in as much detail as you think. When you have finished, write at the bottom, this or something better is now manifesting for me in totally satisfying and harmonious ways for the highest good of all concerned, and add any other affirmations you wish and sign your name. Then sit quietly, relax, visualize your ideal scene at your meditative level of mind and do your affirmations. ये तो बड़ा मजेदार है। तो इसमें हमको अपना गोल लिखना है, ये तो बहुत अच्छा है। गोल लिखना है, उसके बाद जब आपने गोल को पूरा करना है कि मतलब कैसा दिख रहा है वो आपको, कि दैट मेरा बॉडी वेट परफेक्ट हो गया है, मैं बहुत हेल्दी हो गया हूँ। सो प्रेजेंट टेंस में ही है ना, दैट आई एम enjoying the best of my health, I'm looking so good and I'm so glad that I'm so full of compliments from people. I love wearing different dresses now. Any dress that I wear makes me look so good and I'm really happy, and like this has always been my dream to look like this. जबकि अभी हुआ नहीं है आपका, ठीक है? तो ये एज इफ आपका हो चुका है, ऐसे सोचना है, पूरा उसको डिस्क्राइब करना है। और फिर जब पूरा अच्छे से पैराग्राफ में फुल ऑन डिस्क्राइब करो, आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो, ठीक है? और फिर जब आपका फिनिश हो गया तो उसके नीचे लिखो, this or something better is now manifesting for me in totally satisfying and harmonious ways for the highest good of all concerned. So ये तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो अभी, बिकॉज ये फिर ऐसे याद नहीं रहेगा और मुझे लगता नहीं कि कोई इतनी मेहनत करेगा कि किताब खोले। सो ये इसका स्क्रीनशॉट हम डाल देते हैं जस्ट टू मेक इट इजियर एंड सेव एवरीवन्स टाइम। सो अपने गोल को डिस्क्राइब करके बड़ा पैराग्राफ लिख के उसके बाद ये लिखेंगे हम एंड में, और उसके बाद जो एफर्मेशन आपको ऐड करनी है, लाइक आई एम सुपर हैप्पी फॉर माय आइडियल बॉडी वेट, है ना, ये एफर्मेशन होगी जो एग्जांपल मैंने बताया। उसके बाद तो ये नाम आपका लिखना है, साइन एंड योर नेम, आपका नाम और उसके ऊपर आपकी सिग्नेचर, ये भी लिखना है, ठीक है? तो ये पूरी है। आपने पहले पैराग्राफ में अपने गोल को डिस्क्राइब किया बहुत अच्छे से, निटी ग्रिटीज लिखो। अगर आपको लाइफ पार्टनर चाहिए तो
गो डाउन टू द बेसिक निटिग्रिटीज कि आप कितने मजे कर रहे हो, कैसा बिहेवियर है, आप ये बोलते हो तो कैसे बोलती है, कैसी आपकी रिलेशनशिप है, बहुत जॉयफुल और अंडरस्टैंडिंग है, जब भी वॉक करते हो तो हाथ पकड़ के करते हो, इतने रोमांटिक दिखते हो, सब लोग बोलते हैं कि ऑल आर सच रोमांटिक पीपल, कभी कभी एक ही प्लेट से खाना खाते हो, वट एवर इट इज दैट यू वॉन्ट टू, लाइक दिस जस्ट एज एन एग्जाम्पल है कि आप बहुत डिटेल में भी लिख सकते हो आपको जो करना है, सोचा है आपने। सो वो सारा एज इफ इट्स ऑल हैपनिंग राइट नाउ ऐसे लिखना है ना, वी आर डूइंग दिस एंड यू नो शी इज और ही इज सो अमेजिंग एंड कीप्स गिविंग मी ब्यूटीफुल सरप्राइजेस एंड ऑलवेज होल्ड्स माय हैंड, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मेरी फेवरेट जगह पे वी गो आउट टू ईट टुगेदर, वी लव गोइंग आउट फॉर अ कैंडल लाइट डिनर्स, वी ऑल्सो लव कुकिंग टुगेदर, दैट वे। सो वट एवर इट इज वो लिख के फिर उसके बाद आपको ये एफर्मेशन लिखनी है, मतलब ये जो सेंटेंस था कि दिस वाज समथिंग बेटर इज नाउ मैनिफेस्टिंग एंड ऑल दैट, फिर आपको अपना साइन नाम लिखना है और फिर उसके ऊपर आपको अपना सिग्नेचर करना है और उसके बाद बैठ के विजुलाइज करो कि कितना अच्छा लग रहा है वो। दिस इज अ वेरी क्विक वे ऑफ लाइक आइडियल स्टेट, चैप्टर का नाम ही आइडियल स्टेट है ना, तो ये आइडियल स्टेट है, विजुलाइज करना है कि कैसा दिख रहा है, ठीक है। और ये अपने लिए करना है, किसी और के लिए वो मत करो, मतलब अगेन लाइक हो सकता है फ्री विल होनी चाहिए दूसरे पर्सन की भी, तो फ्री विल होनी बहुत जरूरी है। अगर वो लड़की या लड़का आपसे प्यार करता है और शादी करना चाहता है तभी आप ये करोगे, अगर वो किसी और से प्यार करती है तो आप ये नहीं कर सकते, ठीक है, ये फॉल बैक करेगा। सो इसलिए आई ऑलवेज से दैट अपनी जिंदगी पे वर्क करो, किसी और की जिंदगी अपने आप आपकी वजह से बदल जाएगी, अपना कप फुल करो सो दैट यू कैन स्टार्ट गिविंग इट टू द अदर्स, है ना। सो इस ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है। सपोज अगर आप किसी के लिए प्रे कर रहे हो कि वो हर महीने 5 लाख रुपए कमाए, अगर आप ऐसे प्रे कर रहे हो, सपोज आप अपने स्पाउस के लिए कर रहे हो कि हर महीने वो बहुत इजीली 5 लाख रुपीस कमाए, लेकिन उसका गोल है 3, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाती है, ठीक है। तो या तो आप बैठो, डिसाइड करो कि दोनों किस एग्जैक्टली क्या गोल है, जैसे अगर आपको अपना ऑफिस एक्सपैंड करना है और वन पर्सन वांट्स कि 5 ऑफिस हो जाएं बस दिल्ली एनसीआर में, और एक सोच रहा है कि नहीं मुझे अभी एक और खोलना है बस, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग है, इसमें फ्री विल नहीं है। तो जब गोल सेटिंग करते हैं या कुछ, तो उसमें फ्री विल दूसरे की होनी बहुत जरूरी होती है। you know for yourself it's very difficult to know for the other person, है ना। सो उसके साथ में इसीलिए अपनी अपनी जिंदगी पे फोकस करो, अपने आप धीरे धीरे वो एनर्जी एक्सपेंशन के कारण आपकी फैमिली उस सर्कल में होगी इन एनी केस, तो वो कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे मीतू अभी पढ़ रही है, अब मीतू का बेटा है, मैरिज के लिए एलिजिबल है, अब मीतू को लगता है कि उसकी शादी हो जाए, बट ऋषभ को लगता है कि नहीं, वो बोलता भी है मुझे नहीं आंटी, अब आई लाइक आई वांट टू वेट एंड आई वांट टू बी श्योर दैट आई एम गोइंग टू मैरी दिस गर्ल फॉर नाउ, लाइक आई एम नॉट श्योर। सो फिर वो कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाएगा, ठीक है। अब ये इमेजिन करेंगी तो ये उसकी बीवी इमेजिन कर सकती हैं, बट उस ए पर्टिकुलर पर्सन को नहीं कर सकती, बिकॉज वो बोल रहा है कि आई नीड टू बी श्योर दैट आई नीड टू मैरी दिस पर्टिकुलर गर्ल ओनली। सो इवन व्हेन आई जस्ट एज एन एग्जांपल, ओके, so this is how you have to be sure of your goals. So please conflicting goals मत रखो, या conflicting अगर कुछ है तो उसको मत रखो, अपने लिए करो that I can become worth like receiving 10 lakh rupees every month and giving a lot of comfort and luxury to my family. ये बड़ी आराम से अचीव हो जाएगा क्योंकि ये आपके बारे में है और आपको पता है कि मैं 10 लाख रुपए हर महीने रिसीव करूंगी तो मैं अपनी फैमिली को बहुत अच्छी लग्जरियस लाइफ दे पाऊंगी, है ना। एज एन एग्जाम्पल 10, 25, 50 जो भी आपका है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू फोकस ऑन आवरसेल्व्स एंड ऑफ कोर्स उस ऑरा में जो भी होगा उनकी जिंदगी बदलती जाएगी, है ना। जैसे हमारे मॉर्निंग सेशन के ऑरा से जिंदगी बदलेगी। यूट्यूब पे ये वाली एनर्जी नहीं होगी, यूट्यूब पे ज्ञान होगा, देयर विल बी नॉलेज, देयर विल बी लर्निंग, there will be a lot of affirmations, but energy तो zoom पर ही होगी, because we are live and we are talking, so there's always a difference. So similarly अपने लिए focus करोगे आप highest energy में रहोगे,
ठीक है, while at the same time आपका गोल ये हो सकता है, घर खरीदना है तो वो तो फैमिली का घर है ना, सो अब सबसे पूछ लो, हो सकता है अगला चाह रहा हो 3 कमरे का घर, आप चाह रहे हो 5 BHK। सो इसीलिए एक बार बैठ के वैसे ही डिस्कस कर लो कि इतना इतना कर लेते हैं, इतना लेते हैं, और इसके लिए हम प्रे करते हैं, मैनिफेस्ट करेंगे, क्योंकि आपको इमेजिन भी तो करना पड़ेगा ना। जब इसमें विजुअलाइजेशन लास्ट है, सिट क्वाइटली रिलैक्स एंड विजुअलाइज योर आइडियल सीन, कि आपने घर खरीद लिया है, ठीक है, सो वो 3 कमरे का है, और उसमें कौन सा रूम किसका है, एक आपके बच्चे का है, एक आप लोगों का है, एक गेस्ट रूम है जिसमें कभी कभी आपके पेरेंट्स आएंगे या मे बी वो साथ ही रहते हों, तो बहुत अच्छा हो जाएगा इस तरह से। सो सबकी सहमति होनी चाहिए जो आप विजुअलाइज कर रहे हो, बिकॉज हो सकता है अगला कुछ और सोच रहा हो तो उसकी एनर्जी आपकी एनर्जी से कॉन्फ्लिक्ट करेगी। इसीलिए फ्री विल बहुत जरूरी होती है, जिसके बारे में हमने पहली डिटेल में बेंटनो मैसारो की बुक में बहुत डिटेल में पढ़ा था कि अगले की फ्री विल होनी चाहिए। ठीक है, चलो जी, this is all we have for today. John sir, thank you Meetu so much for reading. Thank you. Ma'am, thank you a lot for Yeah, John sir wanted to share yesterday and then we had to end the session क्योंकि late हो गया था. Are you there on the call today? मुझे भी शेयर करना है मैम। हाँ प्रिया, तो थोड़ा शॉर्ट में कर देना, मेरा वर्क डे है और सो आई हैव टू। Actually, I got this debit card day before yesterday. तो और ये IDBI बैंक का है मैम, और सब कुछ आप इतना ब्लेसिंग्स करते हो तो इतना जल्दी जल्दी और बिल्कुल वर्चुअली, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मेरा अकाउंट ओपन हुआ और फिर उसके बाद ये मेरे पास आ गया। और आयुष सर जो है ही इज हेल्पिंग मी फॉर दिस, और उन्होंने रीजनल मैनेजर वगैरह वो सब भेजे थे घर पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए। आज वो यहाँ पर है भी अपने सेशन में हमारे सबके साथ। और एक चीज मैम, थोड़ा सा मतलब आयुष सर की तरफ से बोल रही हूँ, उनकी ना मदर लॉस्ट हो गई थी 3 अक्टूबर को, मतलब कुछ साल पहले। तो ही मतलब थोड़ा सा उनको भी आप ब्लेस करिए, बिकॉज ही समटाइम्स गो ऑन दैट मेमोरी की मदर होती तो अच्छा होता, ऐसे करके। वो जब तक मिस करते रहेंगे तब तक उनकी मदर की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अच्छे मोमेंट सोचने होते हैं, जैसे रोंडा बर्न ने बताया था दैट जब उनके फादर की डेथ हुई थी तो रोंडा बर्न की मदर ने शुरू में तो मोर्न किया, ऑब्वियसली यू मिस दैट पर्सन ना, दैट्स वेरी नेचुरल, बट आफ्टर दैट अपना मेंटल मसल डेवलप किया टू think of all the beautiful things that the mother has done and how nice time they have spent, and to kind of really bless the mother that जहां पे भी हो बहुत सुख, बहुत शांति, और जहां पे भी वो जाएं खूब समृद्धि उनको मिले, खूब प्यार मिले, only then her life wherever it is will be beautiful. So of course, like we wish her a beautiful life ahead, and आयुष को अपने आप खुद काम करना पड़ेगा, मैं तो उनके लिए कर नहीं पाऊंगी। और मेरी ब्लेसिंग उनकी मम्मी को चली गई है ऑलरेडी। ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ जी प्रिया, यू वांट टू शेयर? हाँ मेरा प्रिया, न्यू लुक मैंने लिया है कल ही, वो सब भी मतलब मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मेरा ये लुक मुझे चाहिए, और बहुत सालों से सोच रही थी इस लुक के लिए, और मेरे को कल ये लुक मिल गया है, परमानेंट वाला हेयर का। यू लुकिंग नाइस। थैंक यू मैम। चेंज इज ऑलवेज गुड और ना। ऑल बिकॉज ऑफ यू, मतलब आप इतना ब्लेसिंग्स देते हो और इस ग्रुप में सारे लोग मुझे इतना ब्लेसिंग्स देते हैं, उससे मेरी लाइफ इतना चेंज होती जा रही है ना, डे बाय डे आई एम चेंजिंग अ लॉट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ यू, मतलब प्रिया दी, आप और सुनैना दी, सब अब इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस इतने शेयर। लोग मेहनत कर रहे हैं, आज शीबा ने जो किया है कितनी मेहनत का काम है हाँ। ना। ऐसे लोग भी होते हैं जो Not bad. सेल्फलेस है, ऐसे लोग भी होते हैं जो Yes, एक्सट्रैक्ट ma'am. करने में लगे रहते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी सेल्फलेस सर्विस देते हैं, है ना, अलग Yes, अलग we तरह do. के। आई वाज सो टच। I सो want शिवा, to थैंक share यू सो regarding that मच। only, ma'am. हाँ Yes, जी ma'am. Thank you so प्रिया much for नेहरा। giving me this opportunity. हाँ Yes, ma'am. Thank you so much for giving me this opportunity to say something in the session. Yes, ma'am. Actually, yesterday night I was quite getting frazzled कि यार मुझसे कैसे ऐसे गलती हो गई. Someone else was supposed to read और मैंने कैसे मतलब किसी और को बोल दिया. No, sometimes we grudge ourselves कि भी ऐसा हो गया. तो I was in a plan कि tomorrow morning I won't be doing my blessings. मैं सबसे पहले ना एक चॉक आउट करूंगी कि किस तरह से I can make that readers वाला table streamlined. Okay.
So yes, I slept then, and it was quite late at night, and I slept. I said, "Now tomorrow morning I'm going to do this." How can I be so like? Obviously, we cannot be robot. I know, but still, I was getting furious. कि मैं कैसे भूल सकती हूँ यार? कैसे भूल गई मैं? How can I confuse these things? So I slept, and इन द मॉर्निंग मैम व्हेन आई वोक अप, मैंने अपना व्हाट्सएप खोल, मतलब शुरू उठते ही मैं देखते नहीं हूँ, सबसे पहले देखा मैंने टाइम कितना हो गया, और आज बाई चांस की बात है आई वोक अप एट 5:45। मैंने कहा अगेन दैट मिस्टेक टुडे, मैंने कहा कैसे, बिकॉज आई केप्ट दैट मिस्टेक इन माय माइंड दैट आई वोंट बी लाइक राइटिंग माय ब्लेसिंग, इंस्टेड I'll chalk out the plan for that. That's what it happened. So yeah, so then I opened my WhatsApp ना, यू वुडंट बिलीव, खुशबू ने मुझे एक फॉर्म बना के भेजा हुआ था गूगल फॉर्म्स में, कि दीदी आप इतने परेशान हो जाते हो कि ये रीडर्स का सारा खुशबू तिलवानी, उसने मुझे हाँ, बना के भेजा। वी कैन यूज दैट इफ यू वांट, इस तरह से कर स्प्रेडशीट। सकते इनफैक्ट गूगल मैं बोलने फॉर्म। वाली थी एक कि जो अभी ये शीबा ने बनाया ना, इसको हम स्प्रेडशीट पे डाल दें, देन एवरीबडी कैन फिल इट एंड इट विल ऑलवेज बी देयर। या सो उसने ऐसा किया, मैंने कहा, उसको मैंने मैसेज लिखा थैंक यू सो मच, उसके बाद मैं ग्रुप पे गई, मैंने कहा इतना लेट हो गया, मैंने ज्वाइनिंग का लिंक भेज दूं, एंड देयर आई सी शिवाज मैसेज। मैंने कहा मतलब यूनिवर्स डिड इट फॉर मी ना, मैंने यार मतलब कैसे ऐसे, आई वाज थिंकिंग कि मैं कुछ नहीं करके सबसे पहले ये काम करना है मैंने, एंड इट वाज ऑलरेडी डन। सो थैंक यू सो मच खुशबू तिलवानी, थैंक यू सो मच शीबा, एंड यू वुडंट बिलीव, सौम्या ने अभी अभी ज्वाइन किया कुछ दिनों से, उसने मुझे 2-3 दिन पहले ही ऑफर किया था कि इफ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प रिगार्डिंग द कंप्यूटर्स एंड ऑल, देन आई विल बी वेरी प्लीज्ड इफ यू अलाउ मी फॉर दैट। एंड थैंक यू सो मच सौम्या फॉर दैट। अयान ने भी मुझे पहले बोला था व्हेन वी स्टार्टेड दिस रीडिंग थिंग ना, कि बुकिंग थिंग, तो ही सेड कि वी कैन मेक अ स्प्रेडशीट एंड ऑल। So thank you so much everyone for coming up with your ideas, and like you're always giving me this opportunity to improve myself. Thank you so much everyone. I'm really glad, and this is the way the universe answers your prayers. Yeah. And Yeah, but the so selfless, actions always converts into personal benefits. yes ma'am, really Yeah, really it thank you does. so much, Priya, for everything that you do, and for everyone who's so selflessly supporting. Seriously, it also touches my heart so much, Yes ma'am, So, that's right. yes, Neha, you're number 2. So we have like 5 people sharing. We'll make it just 2 minutes, just that what practices you did and outcome. So yes, Neha. Good morning, ma'am. Thank you. Morning. Thank you for coming in my life. Thank you for being a good teacher and mentor. Thank you. That's all you want to say? This is so sweet. Thank you so much. मैम मैं कल रात को आपका फर्स्ट इससे पहला वाला सेशन देखी 10:30 अराउंड started watching that one, and मैं 1:30-2 बजे तक देखती रही continuously and following the everything whatever you have asked to do that one same time में, and I was supposed to, मतलब मुझे सुबह उठना है, मुझे अटेंड करना है, और मैं 5:30 अचानक खुद ही उठ गई and मैंने अटेंड किया because of your energy, ma'am. Thank you, ma'am. Oh, wow. God bless you with the best of life, with the best of life, anything that you Thank desire, but keep challenging yourself. Okay. So it is, yeah. Normally we fall into the complacency circle, kabhi, hai na? तो अपने आप को करते रहो, and you will see where you grow and you reach where. So you are born to lead and shine, and you are a star already. Okay. Thank you so much. Then we have Abha ji. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Ma'am, I just want to share my contribution to the group by singing a few lines, if you allow me. Oh, sure, go ahead. But you're walking in a park. Will it be all right? Yes, ma'am. It's all right. Okay. Yeah. So, ये समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का, ये समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा, मौसम बहार का, बजने लगे आँखों में
कुछ ऐसे सपने कोई बुलाए जैसे नैनों से अपने, नैनों से अपने ये समा है दीदार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का ये समा। थैंक यू मैम, थैंक यू, Beautiful. थैंक यू, Sorry, I was on mute. Thank you so much. I didn't know that you were thank you. such an incredible singer. This is so beautiful. Shyam Actually, ji ko I healthy I competition. wish to sing every weekend. So Oh, yes, ma'am. arey, why not? I mean, you don't have to ask us. So we will see second Saturday and all, like whenever. So Sunday is Shyamji's day also. So maybe you both can do it together. It will Yes, be very ma'am. Yes, good for us. That will my be great. pleasure. My Yeah, pleasure, thank you ma'am. so much, Abaji, and God bless you with the best of Thank health. you. Thank you. Yes, Thank you, John, ma'am. sir. Thank you. Good morning, one and all. Thank you. I just enough good things are happening. We have got one. Our institute one form was to be approved. Yesterday it got approved. Now my request to this August body is my son Gladson is preparing for his CA final. He's somehow he's one more month is there. He needs to write 3 papers in the group 2. I request everyone to give his magic dust and other things. Gladson. Yeah, he's finding it little difficult. Thank you. Take care. Oh, wow. Congratulations. Of course, she's going to come out with shining colors. Thank you so much. Yes, Kavita. By accident, this hand got Hello? raised. So, no, Okay. yes, Kavita, we can hear you and see you. मैं खाली ये क्लियर करना चाह रही हूँ कि मैजिक जैसे आपने अभी आज बताया कि मैजिक गोल करो और गोल लिखो और उसको इस तरह से लिखो, तो मैं जो हमने ड्रीम लिस्ट बनाते हैं और ये गोल एक ही तरह का काम करेगा, मतलब हाँ, मतलब ये बहुत सारे नहीं है, ये एक है, उसमें भी विजुअलाइजेशन है। मैजिक बुक में जो अभी हम कर रहे हैं, जो चैप्टर नंबर 13 पे, हमें 10 गोल लिखने होंगे और उनको मतलब रीफ्रेम करके एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में। तो हाँ, आई मीन कॉमन होने चाहिए, ऐसे नहीं कि यहाँ अलग हो और वहां अलग हो, और उसको है ना। पढ़ लो, जैसे अगर आपका डेली घर पढ़ लो। खरीदना वहां पे है, तो यहाँ पे भी आपका घर खरीदना, विजुअलाइजेशन और वो टेस्टामेंट एंड में जो लिख के साइन करना है, दैट वे। सो गोल सेम होना चाहिए आपका। एक ही बार लिख लो ना, फिर उसको चाहे रोज पढ़ लो, उसको ब्लेस करो, इसमें पढ़ लो। सेकंड क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में, हाँ, विजुअलाइजेशन आप रोज कीजिए। दिस विल बी कॉल्ड अ मेडिटेशन, द गोल मेडिटेशन। और एक आइडियल कंफ्यूजन थीम। और रहता है, मैजिक डस्ट आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, मैजिक डस्ट और मैजिक वो एक और क्या बता रहे थे, वो दोनों हम लोगों को मैजिकल छड़ी है, इससे की जो चीज है ना, 2-3 चीजें मतलब सिमिलर सी है, बट ठीक है, उन्होंने पार्ट में समझाया हमें कि भी ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, तो बस चीजें तो सब एक ही है ना। जैसे हम मैजिक डस्ट डाले, मैजिक छड़ी, मैजिक बॉन्ड, ये तीनों चीजें थोड़ी सी कभी कभी जब दोबारा सुनते तो कंफ्यूजन हो जाता है, फिर लगता है कंफ्यूजन कि होती है। तो अच्छा, जो मैजिक डस्ट होती है ना, ये उन लोगों के लिए है हु मेक अ लाइफ इजियर। ठीक है, हम उनको अच्छा जानते नहीं है। जैसे अच्छा अगर अभी कुछ मे बी सपोज किसी का एसी में ब्रेक डाउन हो जाए, तो वो एसी वाला ठीक करने आएगा, मे बी वोल्टास कंपनी से, या जिस भी कंपनी का आएगा, उस पर्सन को आप जानते थोड़ी हो, लेकिन वो इतना अच्छे से काम करके गया, पेशेंटली बहुत देर तक फिक्स कर रहा था, फिर बोलता है मैम आपका एसी लेके जाते हैं, कल दे देंगे। मैजिक डस्ट उन लोगों के लिए होता है, यू डोंट नो देम पर्सनली, बट दे जस्ट मेक योर लाइफ इजिली, लाइक अ स्विगी एंड अ जोमैटो का, यू डोंट नो देम पर्सनली, बट यू आर सो थैंकफुल टू द सर्विसेज एंड दे आर डूइंग फॉर यू। इतनी जल्दी जल्दी लाइक पैक करके लेके आए, वो बेचारे खुद भूखे होते हैं और हमारे घर पे खाना देते हैं,
है ना। सो तो हमको उनको खूब ब्लेस करना है कि उनकी खूब प्रोस्पेरिटी हो, ये हो। तो दैट्स कॉल्ड मैजिक डस्ट। मैजिक डस्ट में हम लोगों को नहीं जानते, जानते भी है तो मतलब पर्सनली वो नहीं है, दे मेक अ लाइफ इजियर। मैजिक वॉन्ड आपके लव्ड वन के लिए होना चाहिए, अच्छा क्योंकि उसमें आपको उनकी प्रॉब्लम पता है। आपको पता है कि मेरे भाई के साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है, उसके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसकी बीवी बार बार अपने घर चली जाती है गुस्सा होके, मेरा भाई ऐसे कर रहा है, मे बी वो बहुत ड्रिंक करने लग गया है, सपोज ऐसा अगर है तो, है ना। तो आपको मैजिक वॉन्ड करना है, क्योंकि वो पर्सनल रिश्ता है और आप अपने भाई और भाभी को बहुत खुश देखना चाहते हो। फिर आप अपनी आंख बंद करके उनको विजुलाइज करोगे कि वो दोनों कितने प्यार से बैठे हुए हैं साथ में, और भाई ने किस तरह आपको फोन करके बताया, या भाभी ने, जिससे भी आप क्लोज हो, कि उसने बताया कि नहीं अब सब ठीक हो गया, इन्होंने ड्रिंक भी बहुत कम करनी शुरू कर दी है, कभी कभी सैटरडे संडे को ले लेते हैं, there's a lot of harmony in the house, और ध्यान भी रखते हैं, अभी सुबह सुबह कुछ काम भी करने लगे हैं मेरे साथ में, तो इजी हो जाता है। तो बहुत सिचुएशन में 80% इम्प्रूवमेंट आ गया है। फिर आप बोलोगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर, भाई का नाम लेके, फॉर हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। ये मैजिक वॉन्ड है। तो बहुत फर्क है दोनों में। उसमें विजुअलाइजेशन कहाँ है? मैजिक डस्ट में विजुअलाइजेशन नहीं होता। मैजिक डस्ट किसी के लिए भी होता है, मैजिक वॉन्ड आपके लव्ड वंस के लिए है। लव्ड वंस जरूरी नहीं फैमिली हो, आपकी फ्रेंड, आपका बॉस, आपकी कोलीग, आपके नेबर, किसी के लिए भी जो क्लोज है और आपको शेयर करते हैं वो, मतलब उनकी जिंदगी आपके सामने, you know that what's going on in their life. So that's called magic wand. और magic wand में first you have to visualize, then you have to say thank you, thank you, thank you for say so and so person's health, wealth and happiness, या जो भी चीज आपको जो blessing देनी हो। So ये magic wand है। ठीक है, आप क्लियर हो गया आपको? थैंक यू। हाँ बहुत अच्छे से, वेरी Yeah. नाइस, थैंक यू सो मच। Thank you. Bye थैंक यू। bye. Bye everybody. Have a beautiful weekend and see you again tomorrow morning. Thank you, Dipti. Beautiful dress. Very Thank nice you. Yeah. color. It is a खड़े होके nice Have a दिखा दो, match. बहुत अच्छे लग रहे हो. Oh yes, wow. it is a nice Very dress. nice combination. एक सेकंड में, सो पहले हम YouTube को बाय बोल देते हैं। सो टू ऑल द YouTube viewers, thank you so much. I love you and wish you with the best of life. And if you can come for the morning session, please do. 6 a.m. energy is very different. You're going to love it and enjoy your life.